गुड इवनिंग। तो मेरे यहाँ के ये बच्चे इंट्रैक्शन इनको मैंने कल एक टॉपिक दिया था कि सबको कुछ आपको इस टॉपिक के बारे में बोलना है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल ही आपको आगे लेके जाता है। तो ये सब बच्चे मेरे बोलेंगे। ये मेरा जूनियर टीम का बच्चा है। मेरे द्वारा 6 to 10 क्लास संचालित किया जाता है, जिसमें ये लोग 5-6 के विद्यार्थी हैं और अपने बारे में अपना जो है प्रेजेंटेशन देंगे उस टॉपिक के माध्यम से। तो चलिए, रेडी? नहीं? ठीक है ना? मैं जो बोलूँगा उसको ध्यान से आप सुनेंगे। रेडी? इज एवरीवन रेडी टू स्पीक अबाउट द टॉपिक आई गेव यस्टरडे? Yes. So please get ready to talk about it one by one. So one is nervous system, and another is solar system, and third one is matter, and fourth one is brain. So nervous. Who says? हाँ. Motor. And loud. Be loudly. So my chapter is nerves. The motor nerves, the masses through the brain. The masses go from the brain to the body, and sensory nerves. Okay, try to improve it. Na? Okay. You have to make practice at least 1 hour to do something about it. Na? Okay. अंकुर श्रीवास्तव ना, सोलर सिस्टम। और आ गया जहाँ पर The sun have a family called solar system. The solar system contains 8 planets. There are millions of stars in solar system, and the asteroids, meteorites, comets, sun, moon, etc. So these all are the parts, galaxies, all are the parts of the solar system. So the sun is the biggest member of the family. So how many planets are there in the solar system? 8 planets. First one is Mercury, the smallest planet. Second, Venus, the hottest planet. Third, the Earth, the blue planet and the life planet. The fourth one, Mars, the red planet. The fifth one is Jupiter, and the sixth one is the Saturn, ring planet. The seventh one is the Uranus, opposite planet, and the eighth one is Neptune, the coldest planet. So the definition about these are the Mercury is closest planet to the sun. In the day, the Mercury is very hot due to the sun's heat, and in the night, the Mercury is very cold because the opposites of sun. Okay, so the Mercury is the smallest planet, and the Venus. Second is your Venus. Venus is the hottest planet. On the Venus, there are volcanoes. All the natural disaster happens in the Venus. Okay, so the gases present in the Venus are not oxygen. We can't live in the Venus because the hotness, and without oxygen we can't live. Without nitrogen we can't live. Okay, so what are the gases? There are carbon dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide. So these are etc. gases are there in the Venus planet. And the third is Earth planet, on which we are living. It is called the blue planet because it is full of water. On the top in the space, when you go and see the Earth, you will see the planets. The water is colorless, and when you see in the space, the full water will look as you like a blue. So it is named as blue planet. Okay, what is a planet? A planet is a heavenly body that is defined as how the planets can be seen. There are options: telescope, microscope, or periscope. Thus, by the telescope we can see the planets. Okay, and the other parts of the living, other parts of the sun are the
coalition of stars which make a shape is called constellation. Like Ursa Major constellation, it contains only 50 to 60 stars, but there are millions stars. There are millions of Ursa Major in the night sky. Okay, and the Mars, it is red planet because the red stones on that are famous for its planet and beauty, the natural beauty. Okay, so but why we can't live? There is oxygen in the Mars, but why can't we live? Because there is no water on the Mars. Okay, that's why we can't live on the Mars. We are living in the Earth only. And then next is your Jupiter planet. Jupiter planet is it is made up of gaseous planet, we can say. It is made up of full of gases, and it is the biggest planet in our solar system. Okay, and the next is your Saturn. It has a big ring around it for its safety. Okay, and the dust, rocks, particles are in Saturn. And main thing is about that Saturn have the maximum amount of moons. Saturn have 82 moons, and Jupiter have 75 moons. Okay, our Earth have one moon, but one question is that why Mercury and Venus do not have moon? Because the answer is the sun. The sun has blast their moon. They have also one moon. The sun has blast their moons and make these two planets without moon. Okay, so that's why the Mercury and the Venus has no moons. And the next is your Uranus. Uranus is called the opposite planets because all the planets are running in one direction doing the revolution of the sun, but the Uranus is doing the opposite of that. It is running like a anti-clockwise. Okay, and the next is your Neptune. Neptune is the coldest planet in the solar system, and it has a small ring. We can't see, but it's a small ring in real. Okay, and if we talk about the comets, asteroids, meteorites, these all if we talk, then the asteroids are big rock, then they come in our atmosphere and land and destroy our Earth. Do you know that when we are not living here, there were dinosaurs living on this Earth? Why they are not here? Because of the one biggest asteroid has destroyed in the Mexico. It has come and destroyed all the dinosaurs present in our Earth. Okay, and this is happens. Why this? If you have think that why this Earth, why this our India, why this all in our life? There are only 24 hours. Why there are not 31 hours? Okay, because when we are told you to run in this speed, run in 1 kilometer per hour in speed. If we tell you, and in the journey we will give you some big bags, big heavy bags, so your speed will become less. That is why in millions of years ago, when the dinosaurs were, the hour were more than 31 hours, and the asteroid came and destroyed our Earth. Due to that, the speed of the Earth reduced and came to 24 hours. Okay, in the future time, this Earth will become the smallest hour due to these asteroids. When they are coming in our atmosphere, the atmosphere, why they are landing on the Earth? Why they are landing? Due to the gravity of the Earth. Okay, and when they are coming in the atmosphere layer, they are started burning, and when they are landing here, they destroyed by time. Okay, so Ankur Srivastava, you say about matter.
three types of matter: solid, liquid, and gas. Solid is tightly packed, not like liquid. Loudly. Do not Solid has blocked molecules. It does not allow any transparent thing to pass it. First, let's understand the property. In solid, the molecules are closely packed. In liquid, the molecules are loosely packed. In gas, the molecules are far apart. So in solid, the molecules are closely packed. So there is strong force of attraction. It does not allow, like this wall. So this wall has large force of attraction by the cement. And the liquid can flow. Liquid can change its volume, but it can also be loudly. Any information you have? So everyone having responsibility to say at least 10 minutes. Okay, so next day you will do better or not? Next day you will do na? So first of all we have to prepare on it na? Huh? ठीक है? Day by day thing is going to improve na? So now your name is प्रणव कुमार ब्रेन। आप लोगों को डेली आप लोग को डेली एक टॉपिक के बारे में 5 से 7 मिनट बोलना है, याद रखना है, जिससे आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यही कम्युनिकेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इतना स्मार्ट बनाएगा जो आगे चल के अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाइएगा। तो मेरे यहाँ के बच्चे, मेरा खास ये होता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जेस्चर, पोस्चर, योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। सब चीज़ आपका होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इस बात कम्युनिकेशन को ध्यान रखते हुए मैं क्लास करवाने के बाद 10 से 15 मिनट का आप लोगों का डेली मैं डिबेट कराऊंगा, और मैं ऑलरेडी टॉपिक दे दूंगा कि कल आपको किसके बारे में बताना है, और आपको प्रिपेयर होके आना है। उससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, आप कहीं इंटरेक्शन अच्छे से कर पाओगे, और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगी। सो प्रणव, ब्रेन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डिड यू से अबाउट? हाँ, लाउडली। The brain is the main part of our body. It is located in our head and protected the bony skull. The brain has 3 main parts, which are cerebellum and medulla. Cerebellum is the biggest part of the brain. It helps us to learn, think, remember, feel. Cerebellum coordinates working of muscles and movements. Medulla connects. ओके, कोई बात नहीं प्रणव, अगले दिन से अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सो व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ प्रणव? IAS बनने के लिए अभी से ही मेहनत करना होगा ना। इफ़ यू वांट टू बिकम एन IAS ना, देन बहुत कुछ करना पड़ेगा। भारत का सबसे प्रेस्टिजियस चीज़ होता है ना, आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ आपका जो है एक दूसरे से इंटरेक्शन भी बढ़िया होनी चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करना होगा ना, सबके प्रति हेल्पफुल नेचर बनना पड़ेगा। नहीं, ये सब चीज़ अभी से ही आपको डेवलप करना है। पढ़ाई से ही IAS नहीं बनता है, पढ़ाई करने के साथ साथ आपका सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन भी आपका ठीक ठाक होनी चाहिए। सो व्हाट डू यू वांट टू बिकेम? अभिनव श्रीवास्तव, फिर स्टैंड प्रॉपरली। Cricketer. What do you want to become? IAS officer. Why?
because I will study to become IAS officer and सर्व द पीपुल. yes, ओके. I So- will help the people from this negativity. और सबका इंटरेक्शन करवाएंगे. अभी हम टॉपिक करा रहे हैं, कुछ दिन के बाद एक दूसरे से इंटरेक्शन करवाएंगे, कुछ टॉपिक के बारे में बात करवाएंगे. इसलिए आप लोग को डेली पढ़ाई के साथ साथ ये भी इम्प्रूवमेंट करना होगा. आपको व्हाट डू यू वांट टू बिकेम? IPS officer. आए IPS officer. तो लेकिन मेहनत तो नहीं कर रहे हो. उसके हिसाब से मेहनत करना होगा, ऑनेस्ट बनना पड़ेगा. नहीं, खेलो कूदो सब कुछ करो, लेकिन 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो. खेल भी होनी चाहिए ना, बिहेवियर भी होनी चाहिए, सब चीज़ ठीक ठाक होनी चाहिए. याद किए थे तो सब. कोई बात नहीं, बस याद करो. यदि वेदर यू वांट टू इम्प्रूव ना, राइटिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड. राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग ना, राइटिंग भी होनी चाहिए. राइटिंग स्किल शुड बी रिक्वायर्ड. लिसनिंग भी होना चाहिए ना. जितना लिख सकते हो उतना सुनो, उतना बोलो ना, तब ये चीज़ें आपका हो पाएगा ना. इसलिए सुनना भी ज़रूरी है ना. और आप अपने जितना पढ़ते हो उससे ज़्यादा कहीं लिखो. लिखने से क्या होता है कि इंसान का वो चीज़ अपना हो जाता है. बाकी ऑल द बेस्ट. चलो कोई बात नहीं ना, सब चीज़ एवरी मॉर्निंग इज न्यू स्टार्ट. सबको एकदम सुबह में, सबको प्रत्येक दिन का अलग प्लानिंग होना चाहिए. आज हम कुछ अलग करें, ठीक है. ऑल द बेस्ट. करो ना कल, हैं. चलिए, मेरे क्लास के जूनियर टीम के बच्चे हैं, जूनियर टीम का बीच बच्चे जो 15 से 20 बच्चे, आप एक दूसरे से आप इंटरेक्शन कराएंगे, वो भी आपको हम अपडेट करेंगे. नहीं, चलिए, धन्यवाद आप लोगों को. चलो पीछे आ जाओ. हाँ, कल से आप लोगों का 10 बच्चे का इंटरेक्शन होगा. 10 बच्चों के साथ आपका टॉपिक होगा. लास्ट 10 मिनट्स आप लोगों का 1.5 आवर आप लोग का पढ़ाई, और 10 to 20 मिनट आप लोग का जो है ग्रुप डिस्कशन होगा. नहीं, कम्युनिकेशन पे काम होगा.